हाय, वेलकम टू कोड विद मलिका। ओके, सो आप मेरी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप स्टक हैं एंड दैट आई परफेक्टली नो कि कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। See, everyone has been at this stage, whoever is now a software engineer, and anyone who has a turn for learning coding languages, या थोड़ा सा भी आपको सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एज अ करियर लेना है, कंप्यूटर साइंस को परस्यू करना है, तो कोडिंग कहाँ से शुरू करनी है इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करें? सी प्लस प्लस, जावा, सी, पाइथन और स्विफ्ट और रूबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट नो इश्यूज, everyone faces this and everyone comes to a solution for this. So hi, step by step we'll go ahead. So let's get started. See, मैंने यहाँ पे एज अ डेमोन्स्ट्रेशन 3 लैंग्वेजेस रखी हुई हैं जस्ट फॉर अ क्लैरिटी, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। और लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई लैंग्वेज स्टार्ट कर चुके हैं देन there is no issue because we would be discussing that how we are going to proceed for practicing the languages, how we are going to learn the data structures, everything is fine. Okay, so the first question is which language to start with. See, if you are a Nave user and this is your first coding language, I would definitely say that go ahead with an object oriented language. The first thing should be learning C++ plus प्लस और Java. See, the point is कि आप पाइथन से अगर स्टार्ट करें, डेफिनेटली पाइथन इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड आप उसमें इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड यू कैन use it in creating various frameworks. But as soon as you are able to understand the use of pointers and the use of the basic structuring and working of DSA, that works well in C++ language. It won't it won't be difficult for you for switching to any language. So अगर आप किसी MNC में वर्क कर रहे हैं, you don't have to stick to one particular language. यार, कोई हर प्रोजेक्ट अलग अलग लैंग्वेज में होता है एंड इट शुड बी द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर दैट आपको लैंग्वेज स्विच करने में प्रॉब्लम ना है. So the first thing is either go with C++ or Java as per your interest. I would say go step by step. First learn C, then learning C++ won't be much harder because C का सारा concept C++ में लगता है. Okay, now I would say that how to learn the language. Alright, so I'll introduce the platform to you all, that is HackerRank. Okay, okay, मेरा कैप शायद ऑन रह गया था, नेवर माइंड जी. सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, बट यार तुम यहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर डेवलपर्स. सो मैं यहाँ पे डेवलपर्स में लॉग इन कर रही हूँ एंड ओके, ये मेरा पेज खुल गया है और इसमें मुझको प्रिपेयर करना है. एंड सी, मैंने ये सब अपनी लाइब्रेरी में ऐड करे हुए हैं, बट बेटर देन दैट इज़ आप यहाँ पे प्रिपेयर बाय टॉपिक्स में जाओ. और मैंने यहाँ पे कोई ऐसा है जो करा नहीं है लाइब्रेरी में ऐड. यस, पाइथन नहीं ऐड किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद पाइथन. सपोज मैंने आपको यहाँ पे पाइथन दिखा दिया. सो ये आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ से इजी, मीडियम, हार्ड लेवल्स को उठाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें एंड देन यू शुड प्रोसीड टू एन एडवांस लेवल, दैट इज अ मीडियम लेवल और अ हार्ड लेवल. Okay, then what you can do is after completing the challenges you would be getting some stars here and that you can show on your resume as well. Okay, see, the basic thing is यहाँ आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो. सपोज मैंने यहाँ पे इफ एल्स खोला है, यस, एंड यहाँ पे ये पाइथन के कंपाइलर का ऐसे आ रहा है और इन्होंने मुझको ये जैसे यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए दिया है. यस, ऑड इवन ऑड है आई गेस. यस, इफ इवन है तो इफ ऑड है वी प्रिंट वियर्ड एंड इफ इट इज इन रेंज वी कैन प्रिंट नॉट वियर्ड. Okay, so these are like small exercises that can help us in solving, in understanding the syntax of the program. Okay, now सी, हैकर रैंक से आपको सारे जो इसके सिंटैक्स हैं, इवन डेटा स्ट्रक्चर, सबका बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा
and after completing all of this, you can go on to practicing the problems. All right. So अब हमारे पास दो प्लेटफॉर्म आते हैं. The first is Leetcode, Geeks for Geeks, and the third is competitive programming, basically, that is Code Forces or Code Chef. So what I'll say is, अगर it depends completely. Suppose you are a student and आपके पास काफ़ी कम time बचा है and you have to prepare within a month, I would suggest you go to for Geeks for Geeks. So what happens in Geeks for Geeks? Yes, see, ये आपका Geeks for Geeks का पोर्टल है. Now you want to practice for a specific company, say. So आपको इसमें यहाँ पर जाकर सॉरी सो आपको इसमें यहाँ पर जाकर कोई भी कंपनी के टैग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन मिलेगा. So how you are going to proceed for this? I'll go for practice and I'll go for all DSA problems, and in all DSA problems uh, I can go for, okay, let me move this to side. Yes, so I can go for company tags here. See, Amazon का यहाँ पर tag है, then you can get all of the problems that have been available. So इसके और भी तरीके हैं, but the you can go for this curated list if already you have a little bit of experience and you are preparing for placement and it is within a month or so, और आपको ज़्यादा frequency के question solve करने हैं, so that you can go through this. बट और यहाँ पे थोड़ी एसडी की शीट्स भी हैं, जैसे हमारे और यूट्यूबर्स हैं लव बब्बर और स्ट्राइवर, इन सब की आप यहाँ पे शीट देख सकते हैं. ओके, नाउ वन थिंग मोर, इवन सिर्फ आपको अगर इससे नहीं करना है, देर इज़ वन थिंग मोर, यू कैन गो टू गिटहब. ओके, although this is a hack, I can इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं यार. Okay, so this is a hack and here you can see as well that यहाँ पर जाकर GitHub पर let me log in first. पासवर्ड क्या डाल दिया. ओके, सो अभी मैं आई गेस आपको गिटहब का बता रही थी, बट आई विल जंप टू दैट अ लिटिल लेटर. सी, आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको सिंटैक्स पता लग गया एंड you can get company wise questions here as well. But in case you have time and you want to start by intuition building, see, आपके पास अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन आ जाता है, how you are going to solve? So for that you will go to Leetcode. So Leetcode has a curated list of various questions that have been asked in various companies, and generally companies यहीं से questions pick करती हैं. So if you are able to solve question from this website and एक consistency आप maintain करते हैं, then definitely it will improve you. Okay, so आप problems पे जाओ and how you can use it efficiently is I'll show it to you. सी, द फर्स्ट थिंग इज, आपको सारा एक साथ ऐसे जम्बल्ड वे में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. द फर्स्ट थिंग इज यू कैन गो टू डिफ़िकल्टी, दैट इज़ इजी मीडियम हार्ड, एंड यू कैन सॉर्ट इट. सो इफ़ यू आर अ न्यूबी, नो इशू, स्टार्ट विद ईजी टैग. ईजी टैग से स्टार्ट करो एंड देन आप यहाँ पे जाकर यू कैन यूज़ टैग्स एज वेल. सी कि मेरा आरे ही स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी, नो इशूज़, आरे में टैग लगा के सॉल्व कर लूँ. बट easy questions are quite easy, like syntax based, general logic based, जो आपको आना चाहिए. So try solving around 20-30 questions and then jump to medium level questions. So यहाँ पे आप tag change कर सकते हो and difficulty level यहाँ से change हो सकता है. And then what you can do is you can either opt for the study plan as well. Like suppose I want to solve array questions only, so these are some of the curated list of array questions which have been generally asked.
सो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं. बट सी देर इज वन हैक एज वेल विच आई शो यू. इट इज माई एक्सपीरियंस विच आई कैन डिस्कस. सी अभी एक क्वेश्चन की बात हो रही थी, दैट इज टू सम आई गेस. वेट अ सेकेंड. Okay, see, this is two sum equation hai. So two sum is a type of array question, and I suppose I am unable to understand the logic. No issue. I'll go through the question. I'll try my best, and if I'm able to do it, well and good. But if I'm not able to do it, I'll understand the question. I'll understand the logic, and then how I can apply this logic is I can go to similar questions tag here. So इसी तरीके का लॉजिक. सी इफ एनीवन हैज डन दिस क्वेश्चन आई कैन डिस्क्लोज इट दैट टू सम में टू पॉइंटर अप्रोच यूज होता है. सो टू पॉइंटर अप्रोच इन जगह भी यूज हो सकता है विद बिट वेरिएशन. सो इट कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग अ लॉजिक कि कहाँ से प्रोसीड करना है. सो यू कैन डायरेक्टली पिक अप अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर और फ्रॉम any similar tag question, and then you can solve it. Okay, so this is one thing which I wanted to tell you. And for motivation purpose, what you can do is see. So this is the these are the marks if you are able to maintain a consistency on completing the lead code challenges. uh, you can solve the daily question and then you can get it. See, it acts as a motivation अगर ये आपका regular चलता है. So I was not well here, so मेरा बीच में break हो गया, but now again I'll start with my preparation. Okay. All right. So this is one thing. Another thing is कि अगर आप लीड कोड प्रीमियम ले लेते हो, well and good. It is what you can do is कि आप यहाँ से प्रीमियम अगर आप यूज़ कर रहे हो, then you can select the company. Suppose मैंने गोल्डमैन सैक्स सेलेक्ट किया and then I can get the question. But इसका ना एक हैक है which I want to disclose. Although आपको प्रीमियम जैसी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी. See, आपको जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है ना वो भी यहाँ से पता लगते हैं जो अभी दिस ईयर रिसेंट ईयर में आए हैं. बट व्हाट यू कैन डू इज देयर इज एन एक्सटेंशन व्हिच इज नोन एज बिग ओमेगा. ओके, सो बिग ओमेगा एक्सटेंशन, और इसको आप क्रोम में ऐड कर सकते हैं विच आई हैव ऑलरेडी डन. सी, तो ये मेरा यहाँ पर आ रहा है. So you can add it. Then what you can do is go to Leetcode and कोई भी आप question खोलो. Suppose I have added this medium of two sorted arrays and see, मुझे यहाँ पर एक लिस्ट मिल गई कि ये questions आए हुए हैं. So see, if you are going for company specific question solving, then you can use this if you have a lesser time. Else I won't suggest कि आप company specific question solve करो, because see, you should know the logic instead of curatively selecting or aiming a company, because you never know that what they are gonna ask. Google में तो कभी questions repeat नहीं होते हैं, so it would be better if you work that way. Okay, so this is one thing. Another thing which I wanted to discuss was code forces ladder, code force and code chef. Okay, now suppose you are a competitive coder and you have a lot of time. For competitive programming I would suggest that कम से कम 2 साल का 1.5 साल का time होना चाहिए. If you are not having that time, leave it, don't do that. So for code chef or code forces, what you can do is you can uh, I'd suggest you can go for code chef competitions. Okay, so since the video is taking a lot of time, I cut it short. You can explore this platform. Just one thing I wanted to add is there are code forces ladder as well. Yeah, A2OG I think it is said. So पहले आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए you can start from these ratings and then division. So I think इसका बहुत scope बढ़ जाएगा. So we'll cover this in the next video. And I think this was my first video for on my channel. So thank you anyone who's watching. Thank you so much.